अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज हम यूनिट नंबर 1 का .4 यानी लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है द रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द टीचर। एक टीचर का रोल क्या है और उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। The roles and expectations of a teacher are multifaceted and crucial in shaping the learning experiences and outcomes of student. एक टीचर का रोल या उसकी एक्सपेक्टेशन, जिसको उम्मीद कहते हैं, वो मल्टी फेस्टेड यानी उसके बहुत से एंगल्स हैं, बहुत से मल्टी डायमेंशन है। ठीक है, एक सोसाइटी की को शेप करने में यानी एक सोसाइटी को बनाने में और स्टूडेंट के आउटकम्स के लिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो कौन से रोल्स और एक्सपेक्टेशंस हैं जो टीचर के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, सबसे पहले है जी फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। टीचर जो है वो एक लर्निंग यानी सिखाने का एक फैसिलिटेटर है, वो सिखा रहा है आपको। टीचर्स आर फैसिलिटेटर्स हु गाइड स्टूडेंट्स थ्रू द लर्निंग प्रोसेस। वो लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट्स को गाइड करता है। दे क्रिएट अ सपोर्टिव एंड एंगेजिंग लर्निंग इन्वायरमेंट। वो एक सपोर्टिव और एंगेजिंग लर्निंग इन्वायरमेंट बनाता है वे स्टूडेंट फील इनकरेज टू एक्सप्लोर कॉन्सेप्ट। जहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्या फील करते हैं, वो इनकरेज यानी उसकी तरफ राग़िब होते हैं। टू एक्सप्लोर कॉन्सेप्ट्स, वो नए चीज़ों को सीखते हैं। आस्क क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड मेक कनेक्शन, और फिर वो उस चीज़ों का रियल लाइफ साथ कनेक्शन बनाते हैं। देन है जी नॉलेज प्रोवाइडर। टीचर इम्पॉर्ट नॉलेज एंड स्किल टू देयर स्टूडेंट। टीचर जो है वो नॉलेज यानी इल्म सिखाता है अपने स्टूडेंट्स को। दे डिज़ाइन एंड डिलीवर लेसन्स दैट आर अलाइन विद करिकुलम स्टैंडर्ड एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। वो ऐसा लेसन, ऐसा सबक बनाता है, इस तरह से उसको पढ़ाता है जो आपके करिकुलम यानी आपका जो कोर्स है उसके साथ लिंक हो, आपकी जो लर्निंग का ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ लिंक हो। उसके अलावा वो इंश्योर करे कि स्टूडेंट जो है वो एक्वायर कर रहे हैं या सीख रहे हैं उस नॉलेज को या उस कंटेंट को जो उनकी समझ या उसकी एज ग्रुप के बराबर है। देन मेंटोर एंड रोल मॉडल। अब मेंटोर या रोल मॉडल क्या है? टीचर्स सर्व एज मेंटोर एंड रोल मॉडल्स फॉर देयर स्टूडेंट्स, providing guidance, support and encouragement both academically and personally. टीचर जो है वो एक मेंटोर का रोल प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, और उसके अलावा वो उसको गाइडेंस यानी उनको बताता है, समझाता है, सपोर्ट करता है, इनकरेज करता है, उन्हें राग़िब करता है किस तरह पढ़ाई की तरफ और पर्सनली भी। दे डिमॉन्स्ट्रेट प्रोफेशनलिज्म, इंटीग्रिटी एंड अ कमिटमेंट इन टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स टू इम्यूलिएट दीज क्वालिटीज़। ठीक है, देन है फैसिलिटेटर ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिक कहते हैं किसी पे तनकीद करना। ठीक है, टीचर फॉस्टर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल बाय इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू एनालाइज इंफॉर्मेशन, evaluate evidence and draw their conclusion. They challenge students to think creatively, solve problems independently and encourage in meaningful discussion. उसके बाद है प्रोमोटर ऑफ इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी। टीचर क्रिएट इंक्लूसिव लर्निंग environment where all students feel valued, respected and supportive. They celebrate diversity, promote cultural awareness and accommodate the individual needs and learning styles of students from diverse backgrounds. Assessor of progress. Teacher assess student progress and achievement through various forms of assessment such as test, quiz, projects, presentations. They provide timely and constructive feedback to students, identify areas for improvement, and adjust instructions accordingly. Then collaborative with colleagues and parents. Teacher collaborate with colleagues, parents and other stakeholders to support student learning development. They communicate effectively with parents about student progress, behavior and academic concern, fostering a strong partnership between home and school. Then promoter of lifelong learner. Teacher will instill a love of learning in their students and encourage them to become lifelong learner. They inspire intellectual curiosity
and a thirst for knowledge that extend beyond the classroom and into all aspects of life. Then manager of classroom dynamics. Teacher manage classroom dynamics and maintain a positive learning environment conducive to academic success. They establish clear expectations, routines, and procedures, address behavior issue properly. Teacher can establish clear expectations, routines, and procedures, address behavior issues promptly, and promote a culture of mutual respect and cooperation among students. Advocate for students. Teachers advocate for the needs and interests of their students, ensuring that they have access to resources, support services, and opportunities for academic and personal growth. They advocate for equitable policies and practices that promote social injustice and educational equity for all students. Overall, the role and expectations of a teacher are diverse and demanding, requiring a combination of knowledge, skills, dispositions to effectively support student learning and development. आज का लेक्चर था ये, इसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के HSC के कोर्स लाउंड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट लेक्चर से हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और ये कोर्स आउटलाइन जो मैं डिस्कस कर रही हूँ ये हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से प्रपोज्ड की गई है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।